Okay guys, so up now we have Andrea Louca from Kryolan. Give a round of applause for Andrea, guys. Hi everyone, thank you for having me. So today I'm going to be showing you guys a red carpet event makeup. So this can be done for any occasion. It could be an engagement, it could be for a celebrity. I'm just going to recap on some of the products that I've used before coming onto the stage. So this is quite a glamorous look. This is one of my favorite looks to do. And it's a very, very in there, glamorous type event. So a red carpet event is someone that would maybe be on a walkway, they're going to the movies. It might be that you've got a client who's just going as a guest to a wedding. This is something that you can do for them. So the first product that I used was TV Paint Stick. This is a full coverage foundation that you can apply onto the skin in a really, really nice balanced area. I use the same TV Paint Stick as a highlight and a shading product to make sure I've got a nice combined balance. I've powdered with Dermacolor waterproof powder in P4. P4 is a yellow-based powder that has helped me balance the skin all over. And last and final bit to my skin preparation, I've actually added a dual finish powder as a contour product just on the cheekbones to accentuate them a little bit more. All of these products, you can come over to the Kryolan stand and come and find them on my makeup station. And I can show you all the tips and tricks that I've used if you want to follow me over there. हेलो एवरीवन सो आज हमारे साथ एंड्रिया लूका आई हैं क्रायलन लंदन से स्पेशली हमारे प्रो ब्यूटी में आपको डेमो दिखाने के लिए। आज जो हम लुक कर रहे हैं वो है रेड कार्पेट एडिटोरियल लुक। ये बहुत ही ग्लैमरस लुक है और जैसे कि आप देखेंगे हमने ऑलरेडी इनका बेस करके रखा है। आप में से जो लोग हमारे साथ हमारे क्रायलन बूथ पे थे आपने उसका डेमो भी देखा है। हमने इनके फेस पे टीवी पेंट स्टिक लगाया है एज अ फाउंडेशन और हमने सेम टीवी पेंट स्टिक एज अ हाइलाइटर एंड एज अ कॉन्टोर भी लगाया है। हमने इसे सेट डर्माकलर फिक्सिंग पाउडर P4 से किया है। हमने बेसिकली पाउडर उनके हाई पॉइंट्स पे लगाया है जहाँ पे उनका और ब्राइटन अप होएगा उनका मेकअप। कॉन्टोरिंग के लिए हमने ड्यूअल फिनिश पाउडर यूज़ किया है जो कि बेसिकली अगेन एक पाउडर बेस्ड फाउंडेशन है जो कि आप हाईलाइट कॉन्टोर एंड एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। Okay, so the next product that I'm going to be using is the V6 palette. So this is an 18 color eyeshadow palette. This is one of my favorite palettes to have in my kit. This is really, really good for bridal, special occasions. It's an all-rounder really. I'm going to be using a combination of colors to create that beautiful bronze looking eye. So the first color I'm going to go for is this beautiful orange tone just in the middle of the palette. I'm going to be using a really, really soft blending brush to make sure I can blend the eyeshadow to make sure it looks nice and smooth. The makeup I've created, or that I will be creating, is especially for HD cameras. If you look on the screen, her skin looks flawless. So I've used a product to make sure that she's got this beautiful, smooth looking skin. Now I'm going to enhance the eye makeup to make sure it stands out that little bit more. वो आई शेडो के लिए हमारी 18 कलर वैरायटी पैलेट V6 यूज़ कर रही हैं। सबसे पहले वो एक ऑरेंज कलर लगा रही हैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से उनके क्रीज लाइन में जो कि उनका एक ट्रांजिशन कलर बन जाएगा। आप देखेंगे अगर स्क्रीन पे उनके फेस एकदम स्मूथ लग रहा है क्योंकि हम HD मेकअप कर रहे हैं और जो टीवी पेंट स्टिक है वो HD कैमरास पे एकदम स्मूथ इफेक्ट देता है। अगर आप देखेंगे उन स्क्रीन पे कोई भी उनके स्किन पे कुछ टेक्सचर नहीं दिख रहा है जो कि नॉर्मल पोर्स रहते हैं या पिंपल मार्क्स रहते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। So I don't know whether you can see what shape I'm doing, but I'm actually going towards her socket area and then I'm lifting it up towards the outer corners. What this is doing is it's accentuating the eye area. Yeah? So I always do stage 1 on one side of the eye and I always replicate it on the other side. आप देखेंगे इन्होंने जो ट्रांजिशन कलर जो ऑरेंज कलर लगाया है वो क्रीज लाइन पे लेते हैं
वो आउटर कॉर्नर्स पे ऊपर की तरफ उससे ब्लेंड कर रही हैं, ताकि जो उनकी आईज़ है वो और बड़ी दिखे और उसका शेप और अच्छा डिफाइन हो। आप देखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप जा रही हैं आई शेडोज़ के साथ। उन्होंने एक आई पे ट्रांजिशन कलर लगाया है, तो वो सेम टेक्निक दूसरे आई पे भी कर रही हैं। वो एक आई पूरा कंप्लीट करके दूसरे आई पे नहीं जा रही हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हर कलर को लगा रही हैं। And I'm basically applying the colour where I can see the natural crease of her eye. If you want to, we can technically say that this look on a red carpet event would be a no makeup. This means that there is minimal amount of product on the skin, and it just gives the illusion of a really, really beautiful, smooth looking eye. आप देखेंगे इन्होंने जो ट्रांजिशन कलर है बेसिकली उनका जो नेचुरल सॉकेट लाइन है उसी के थ्रू ब्लेंड किया है। उन्होंने अलग से कुछ भी ऊपर या नीचे वो कलर नहीं लेके आई हैं। आप जो बोलते हैं हम लोग जो नो मेकअप लुक जो रहता है, जिसमें मेकअप रहता है बट स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ मेकअप ही नहीं किया है। अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका एक तो फेस एकदम स्मूथ दिख रहा है और जो आईज़ है वो भी वेल डिफाइंड दिखेंगी। And I'm using the same exact colour all the way under her lash line. So this is giving me that eye definition. उन्होंने जो ब्रिक ऑरेंज कलर जो उनके सॉकेट लाइन पे यूज़ किया है वो सेम कलर वो सेम ब्लेंडिंग ब्रश से उनके लोअर लैश लाइन पे भी लगा रही हैं, ताकि वो बहुत अच्छा शेडिंग देगा। जब फुल आई मेकअप कंप्लीट होएगा तो बहुत अच्छा शेडिंग देगा और एक बहुत अच्छी फुल आई डिफाइंड दिखेगी। Okay, so the next product that I'm going to use is actually again one of my favourite products to work with. I always keep my brushes separate. So this is my blending brush. I'm going to leave it onto my brush belt. I'm actually going to use a product called Cream Liner. This is one of my favourite products from Kryolan. The cream rich liner that you can use as an eyeliner. You can use it in the eyebrows. You can use it on the lips. The colour I'm going to be using is bronze, which is a perfect colour for Indian skin tone because it's got that orange undertone. It can actually work as a colour corrector on the skin. अभी जो आईलिड्स पे प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं वो बेसिकली एचडी क्रीम लाइनर है। ये एक सिलिकॉन बेस क्रीम है जो कि आप एज अ आई शैडो यूज़ कर सकते हैं, आई लाइनर, मस्कारा एंड एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन 20 कलर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अभी जो उन्होंने शेड लिया है वो ब्रॉन्ज है। जैसे कि आपको मालूम है जो ब्रॉन्ज होता है काफ़ी ऑरेंजी मेटालिक शेड होता है, तो वो अगर उनके आईज़ पे डायरेक्टली लगाएंगे एक तो उनका आई शैडो एज इट इज़ हो जाएगा और दूसरा अगर उनके आईज़ पे जो भी पिगमेंटेशन है वो उसे भी न्यूट्रलाइज करेगा। Look at that shine. If you see on the beautiful thing is we've got the TV screen, so you can see that transition of colours. So if you look at this eye compared to this eye, can you see how it's an instant wake-up call? Yeah, it opens the eyes up. It looks amazing. When I'm doing this, I always load my brush on both sides. The brush that I'm using is 9714, which is a really, really good domed-looking brush. वो जो ब्रश यूज़ कर रही हैं एचडी क्रीम लाइनर लगाने के लिए वो एक डोम शेप का आई शैडो ब्रश है जिसका नंबर है 9714। आप देखेंगे उन्होंने एचडी क्रीम लाइनर लगाया है, उनके आईलिड्स ऑटोमेटिकली काफ़ी शाइनी हो चुकी है और क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है ये बहुत जल्दी सेट होता है, तो जो आपका आई शैडो है वो बिल्कुल भी क्रीज नहीं होएगा। आप चाहें एक बार वो सूख जाएगा आप उसके ऊपर वापस एक और लेयर लगा सकते हैं, उससे आपका आई शैडो ना ही पैची होएगा और आपको और हाई इंटेंसिटी मिलेगी। आप अगर टीवी स्क्रीन पे देखेंगे वो शाइन को और बढ़ा रही हैं और वो ऑटोमेटिकली जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो शाइन का ट्रांजिशन हो रहा है वो आप देख सकते हैं। So you can see that beautiful high shine eye, and it's actually opening her eyes up. What I am going to do is I'm just going to lift the eyebrow up very, very slightly to capture the inner corners of the eyes. Close for me. आप अगर देखेंगे उन्होंने उनकी आईब्रो को लिफ्ट किया है जिससे उनकी जो लैश लाइन है वो अच्छे से दिख रही है और उस पर वो जहाँ पे भी स्पेस बचा है, जहाँ पे भी वो कलर नहीं लगा पाई है वो वहाँ पे भी कलर लगा रही हैं ताकि हम आई का कोई भी पार्ट ना छोड़े जहाँ पे कलर नहीं है।
आजकल HD कैमरास का ज़माना है, सब कुछ स्क्रीन पे दिखता है। अगर आप कुछ भी आई को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आप खाली छोड़ देंगे, वो अलग से एक पैच दिखेगा कैमरा पे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप सब कुछ अच्छे से कवर कर रहे हैं, भले वो आई शैडो है, फाउंडेशन है, आप आई लाइनर है या लिपस्टिक है। So, the next product that I'm going to use is a product called satin powder. So again, this is one of my favorite products from Kryolan, and they don't actually get enough credit for what they do. So if you see, satin powder comes in a really bunched up balls. So basically it's the pigment. This is the purest pigment you'll get within an eyeshadow, and it's loose. I'm going to use it as a padding product just into the inner part of the eye area. So I'm going to go for a really nice same shape brush, just a little bit smaller, and I'm going to load and mix my satin powder, and this is going to be my middle tone shade. So this is going to add that beautiful bronze look. वो आई शेडो को और ज़्यादा शाइन और ज़्यादा इंटेंस करने के लिए सैटिन पाउडर यूज़ कर रही है, जो कि बेसिकली एक आई शेडो पिगमेंट है, एक लूज पिगमेंट है। जो सैटिन पाउडर है उसको जब आप लगाएंगे, अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे वो लगा रही हैं, वो एकदम डायमंड लाइक शाइन दे रहा है, एकदम ब्रॉन्जी शाइन दे रहा है वो उनके आईज़ पे। अगेन सैटिन पाउडर काफ़ी शेड में आते हैं, जो इन्होंने लगाया है वो ब्रॉन्ज शेड है। आपको इसमें ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, बहुत तरीके के काफ़ी वेरिएंट्स आपको शेड मिलेंगे। So I've blended enough on my brush that I've actually done both eyes with. The pigment is so strong that I don't have to reach and go and get another bit of the product. Close. आप देखेंगे उनको बिल्कुल भी पाउडर बहुत सारा नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रीम है वो इतना इंटेंस है, उसने ऑलरेडी एक आई शेडो क्रिएट कर दिया है। वो सिर्फ शाइन का ज़्यादा ऐड करने के लिए सैटिन पाउडर यूज़ कर रही हैं। और आप देखेंगे उन्होंने क्रीम लाइनर यूज़ किया है, वो बिल्कुल भी क्रीज नहीं हो रहा है, वो एकदम सेट हो चुका है। Okay, and then picking up my blending brush that I used earlier to apply my orange orange eyeshadow color, close for me. I'm just going to make sure that everything is very, very well blended all together. The one thing I say to anyone that wants to do a beautiful eye makeup, please make sure that you're blending, blending and blending. The more you blend, the more you get that beautiful smooth look, and then underneath camera you get that beautiful eye, you know, that smooth romantic looking eyes, and that's what you want to create, especially for a red carpet event. उन्होंने जिस ब्रश से उनका जो ट्रांजिशन कलर लगाया था, जो कि ऑरेंज कलर उन्होंने लगाया था, वो सेम उसी ब्रश से उनकी जो लाइन्स हैं, जो हम क्रीम लाइनर लगाए थे, जो लाइंस क्रिएट हुए थे, जो एजेस हैं, उससे ब्लेंड कर रही हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, जो कैमरा पे आपको सब कुछ उठ के दिखता है, क्योंकि HD कैमरा है, आपने अगर उससे ब्लेंड नहीं किया, वो अलग से एक शार्प लाइन दिखेगी, वो एक जैसा कलर नहीं दिखेगा। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जब आप आई शेडो कर रहे हैं, आप जितने भी कलर यूज़ कर रहे हैं वो आपस में मिलने चाहिए, वो अलग से दिखने नहीं चाहिए कि हमने एक कलर लगाया फिर दूसरा कलर लगाया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी लगा रहे हैं आई शेडो में, वो अच्छे से ब्लेंडेड हो। Okay, so now I'm going to do a wing liner, but how I like to do my wing liner is, again, with another product I love working with, and I'm probably driving you guys mad, but I mention this all the time. I love having a product in my kit that I can use more than once. So my foundations I use for highlight, shading, contouring, the whole shebang. My eye makeup I can use as a lip product, I can use it as an eyeliner, mascara, in the eyebrows, whatever you prefer. So, HD cream liner in ebony. This is going to be my beautiful wing black eyeliner. I'm going to teach you guys a technique that I like doing when doing eyeliner, and it's really, really easy to get that beautiful balance. If anyone struggles in doing that beautiful eyeliner, this is a technique that I teach my tips and tricks to, and this is how I prefer to do it. आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो HD क्रीम लाइनर है वो मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है। उसका आप आई लाइनर, आई शेडो, मस्कारा
और एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी वो सेम HD क्रीम लाइनर ब्लैक एबिनी को एज एन आई लाइनर यूज़ कर रही हैं। आप अगर देखेंगे वो एक बहुत अच्छा विंग लाइनर क्रिएट कर रही हैं और देखेंगे बहुत इजीली पहले उन्होंने उसका शेप ड्रॉ किया है, फिर उससे वो उसके अंदर कलर कर रही हैं। उन्होंने जो ब्रश लिया है वो एक एंगुलर ब्रश है जिसका नंबर है 9806। क्योंकि उन्होंने एंगुलर ब्रश लिया है, वो जो विंग है वो बहुत इजीली क्रिएट हो गया है। कभी कभार आप जब नॉर्मल आईलाइनर ब्रश लेते हैं, जो विंग होता है वो थोड़ा अच्छे से नहीं आता है, वो थोड़ा जिगजैग जैसा आता है। जब एंगुलर ब्रश लेते हैं तो उससे एक परफेक्ट शेप आपको मिलता है। So as you can see, I've got that beautiful lift of the eye, and I actually started from the outer corners and worked my way in. I created like a triangle shape. So I'm going to show you on the other side. So I always load my brush up on either side and then right on the tip area. So I flatten my brush and then put it on its point. I angle myself upside down because what I want to do is get that really, really good lift. If I go like that, I'm guaranteed to mess it up. So I always angle myself down. I come from the corner of the eye area. And I start my point. You see? You want to... आप जैसे देखेंगे उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्नर से उनके एक लाइन ड्रॉ कर रही है बाहर की तरफ, और अब वो थोड़ा घूम के फिर उसके ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही है। आपको हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी विंग लाइनर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए ताकि आप थोड़ा घूम के अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। कभी कभार क्या होता है, हम लोग एक जगह खड़े होकर लाइन ड्रॉ करते हैं और हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हमारा जो हाथ का मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा जो लाइनर है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप आपको थोड़ा जगह देंगे आई लाइनर करने के लिए तो आप एकदम परफेक्ट लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। So if you're like me and I really, really enjoy drinking coffee, after a couple of hours, I start to shake. So this technique, I've got full control on where my hands are going, and I've got full balance on where my eyeliner is going as well. जैसे कि आपने देखा वो उन्होंने बहुत इजीली वो जो विंग लाइनर है, जो कि विंग है, उन्होंने बहुत इजीली ड्रॉ कर लिया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका हाथ का मूवमेंट कैसा है। आपको अपने आप को एकदम कंफर्टेबल रखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका हाथ काँप रहा है एकदम लाइनर करते हुए, आप 2 मिनट रुकिए और फिर आप अपना हाथ पकड़ के उसे अच्छे से कर सकते हैं। Sure. Are you feeling hot? No? So as you can see, I'm getting that really, really nice balanced line. And even though I've got heels on, I'm still a little bit short. So I try and get above the lash line. So I try and get above my model or my client, depending on where I'm working. जैसे कि आप देखेंगे अगेन उन्होंने उनके आईब्रो को लिफ्ट करके जहाँ पे भी उनके लैश लाइन के पास में जितना लाइनर ले जा सकते हैं वो उतना ले जा रही है। और आप देखेंगे उनका जो ब्रश का जो साइड है वो उन्होंने ऊपर से ब्रश को पकड़ा है और वो फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर रही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम नीचे से उसको लेके फिर ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो अच्छे से लैशेस के पास में नहीं जा पाता है। अगर आप ऊपर से पकड़ के अगर करेंगे तो एकदम आपके लैशेस के पास में जाएगा और आपके इवन लैशेस को भी इंटेंसिफाई करेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट आप ऐसा मस्कारा भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी लैशेस को भी अच्छे से पेंट कर देगा और आपकी कोई भी स्पेस नहीं बचेगा जहाँ पे लाइनर नहीं लगाया है। So, once I'm happy with my my liner shape, my lash line shape, I then circle and look on either side to make sure that I've got a really, really good balance. आप हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी 2 लाइनर करते हैं, स्पेशली विंग लाइनर, आप थोड़ा घूम के देखिए कि दोनों लाइनर सेम है या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप उसी टाइम उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्रीम लाइनर एक सेल्फ सेटिंग प्रोडक्ट है तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। इसलिए आपको अगर उसको आप फटाफट अगर उसको आप करेक्ट कर देंगे तो आपको एक प्ले टाइम मिलेगा जिसमें आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं।
When I'm actually doing this though, I don't always stand on one side. I always try and be right smack in the middle. Reason being is when you're on one side, you always end up having a good side and a bad side. But if that is the case, I'm going to show you a technique with makeup blend. I've done a little bit of a mistake, but I've done it for a reason because I want to show you the way to do an eyeliner and get it clean. Yes, darling. जैसे कि आप सबके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, हम सबका एक कंफर्टेबल आई रहता है जहाँ पे हम एकदम परफेक्ट लाइनर करते हैं, और एक आई रहता है जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. अभी आपको वो टेक्निक बताएंगी कि अगर ऐसा हो भी जाता है आपके साथ, आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं. हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मेकअप ब्लेंड. आप में से काफ़ी लोग उसे यूज़ भी करते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे. ये बेसिकली एक ब्लेंडर है जो कि एज अ डाइल्यूटर भी काम करता है और एज अ मेकअप करेक्टर भी ये काम करता है. Can you see the different shapes? Yeah, can you see the different looks? Don't stress. It's just makeup. And I say this to anyone that's doing this, and I promise you, when it comes down to doing an eyeliner, you always want to try and get it a perfect balance as you go along. Makeup blend on a flat-based brush. Close. जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, उस पर थोड़ा सा मेकअप ब्लेंड लेके वो जो भी उनका विंग है उसे करेक्ट कर रही हैं. And all I'm doing is cleaning up my edges. आप देखेंगे जो फ्लिक है वो उसे एकदम शार्प इफेक्ट देने के लिए मेकअप ब्लेंड यूज़ कर रही हैं. So what makeup there is for, makeup blend is perfect. I'm going to turn my model, and I like to come from behind to get that really, really good sharp line. And I do this with lips and eyes because my worst nightmare is when I look at visuals on a makeup screen and it's not balanced. Regardless of what level you are, we always have good and bad days. So I make sure that we've got that really, and the other thing as well, if you go by their natural eye shape and their eyes start pointing down, you're going to make them look like their eyes are sad. We don't want sad faces, we want happy faces. So I always get the liner upwards to lift up the eye line. Yeah? Same as I do on my own makeup, and to my colleagues, I always lift up the eyes. For more mature clients, when you use matte and you lift it up, it actually adds that beautiful high shine cheekbone. So this is a technique I want you all to have a little go with. जैसे कि आपने देखा उन्होंने अपनी मॉडल को पहले स्माइल करने को बोला, उसके ऊपर फिर उन्होंने उनके एप्पल्स पे ब्लशर लगाया है और उसे फिर साइड में ब्लेंड किया है. बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ब्लशर को डायरेक्ट साइड में लगाते हैं और एप्पल्स को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत अजीब लगता है. हमको बेसिकली ब्लशर फेस को लिफ्ट करने के लिए लगाना है, और अगर हम उसे एप्पल्स पे नहीं लगाएंगे तो वो लिफ्टेड नहीं दिखेगा, क्योंकि बेसिकली जब हम मेकअप करते हैं हम खुश रहते हैं, और जब हम ब्लशर लगाते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम खुश हैं. अगर आप एप्पल्स पे ही नहीं लगाएंगे तो एकदम उनका जो लिफ्टेड जो हैप्पी लुक देना है वो नहीं मिलेगा उन्हें. Okay, so I'm just going to get my lashes prepped, and then in the meanwhile I'm going to do the lips. Can you combine them two together for me? So as I get that done, I'm actually going to come in and do the lips. So one of my favourite products, another fave, and I wear it myself, and I'm sure anyone that's got the booklet has seen the picture on the back. That is me, by the way, and I'm wearing this colour here. This is Lip Stain in Rock. So who's got the booklet? Whoever's got the book from this morning, if you flip it round, I'm on the back and I'm wearing this beautiful rich red colour. Yeah? So this is my red carpet lip. This is a beautiful matte lipstick, liquid matte. लिपस्टिक के लिए वो लिक्विड मैट लिप स्टेन यूज़ कर रही हैं. उन्होंने जो शेड लिया है वो है रॉक.
अब जैसे कि देखेंगे उनके हाथ पे वो एक बहुत अच्छा रिच रेड कलर है जो कि हमारी मॉडल की ड्रेस के साथ भी जाएगा, और एक ये बहुत अच्छा रेड कारपेट कलर है जो कि आपके फेस को ऑटोमेटिकली और ज़्यादा ब्राइटन अप कर देता है, और रेड कलर ऐसा है कि सब स्किन पे अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा उन्होंने जो लिपस्टिक का जो ब्रश उसके साथ आता है, उन्होंने वो डायरेक्टली यूज़ ना करते हुए उन्होंने थोड़ा अपने हाथ पे निकाला और फिर वो अपने दूसरे क्रिट की लिप ब्रश में से लगा रही है। हम क्रायलिन में हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिप ब्रश जो लिपस्टिक के साथ आता है वो ना यूज़ करते हुए अपने किट का लिप ब्रश यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, पहली बात तो वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी आपके क्लाइंट पे लिपस्टिक लगा रहे हैं, अगर उनके लिप्स पे थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन हुआ वो आपके प्रोडक्ट में जाएगा और आपके प्रोडक्ट को गंदा करेगा। और दूसरी बात, आप वो सेम लिपस्टिक जब किसी और पे लगाएंगे उनको सेम इन्फेक्शन मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वैसा ना करते हुए आपके जो ब्रश किट होएगी उसमें लिप ब्रश फॉर श्योर होएगा, आप उससे लगाएं। So when I'm doing lips, guys, if you notice, I always put my thumb or my finger right next to where the lip line is. The reason why I do this, and this is a tip and trick that I'd love for you all to take away with you today. If you want to make the lips look more fuller, rather than making them look unnaturally full, I'm working with the natural plumpness of the lip. So if you want, watch the screen and I'll show you exactly what happens. As I push my finger here, the lip line comes out. Yeah? Which means I get my product and I'm able to round the lips up towards that shape. With the tip of my brush, I then blend my edges. Yeah? Look at that side versus this side. Her lips look full but still natural. Not big overdrawn lips. This is not what we're doing. It's not clown makeup. We're doing nice red carpet makeup. And I'm going to do... Oh, sorry. Yep. जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने अपने थंब से जो हमारी मॉडल है उनका लिप को थोड़ा सा लिफ्ट किया, ताकि जो उनकी नेचुरल जो लिप की लाइन है वो उसे कवर कर सके, और एक नेचुरल जो उनका लिप का शेप है उसे कवर कर सके। बहुत लोग ओवर ड्राइंग करते हैं अपने लिप्स को, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप कैमरास में देखेंगे बहुत अजीब दिखता है। इससे उनका लिप फुली कवर हो जाएगा और जो आपको लिप शेप देने में जो मुश्किल पड़ती है वो भी नहीं आएगी। अब एक और चीज़ नोटिस करेंगे, इन्होंने लिप पेंसिल यूज़ नहीं करी है, इन्होंने डायरेक्ट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है, क्योंकि हमारी जो लिक्विड लिपस्टिक है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है और ये सिलिकॉन बेस है। इसलिए क्योंकि ये इंटेंस है, इनको लिप पेंसिल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, और क्योंकि ये सिलिकॉन बेस से ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक को बनाता है, इसलिए आपको लिप पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। So as you can see, I'm able to actually make the lips more fuller by just applying a little bit of the lip stain just above her lip line. Right together, let's keep it like that. Once I'm happy with my shape, I'm now going to go in and make sure everything is nicely balanced. This is one thing I would highly recommend, this and eyeliner. When you're doing lips or eyes, please make sure that you're capturing all the areas. If your model or your client is like me, when I laugh I throw my head back, please make sure that you're capturing the under part of the line. जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने लिपस्टिक के लिए भी बहुत ध्यान से हर एक एरिया को कवर किया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लिपस्टिक लगाने में डरते हैं और कभी कभार लिपस्टिक थोड़ी सी लगा के उसे ब्लेंड करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लिप्स बहुत छोटे दिखते हैं। आप देखेंगे उन्होंने लिप को अच्छे से लिफ्ट करके उसकी हर एक जो एजेस है, जो लाइन्स है, उससे अच्छे से उन्होंने कवर किया है, जिसकी वजह से उनके लिप्स ऑटोमेटिकली फुल दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं। And if you notice, so if you notice, I've made sure that when I've looked at the lips, I've made sure that they're balanced in every way possible.
Even if you have to make sure that the lip line is completely balanced, just step back, have a look, and then carry on. This is something that when you're up close and personal, see, she gets freaked out. Step back, look at the look, and then carry on. Because sometimes when you're a little bit close, you see things a little. I put them into place, clean my brush, and I press the lashes down. This is much more comfortable than going in with tweezers, believe me, and I do not want you to be the person that gets nudged by a family member and ends up poking your client in the eye. Because I've seen it when I was working backstage at Fashion Week. Someone which was quite a high celebrity at backstage ended up getting poked in the eye with tweezers. Don't use tweezers, use the edge of your brush. जैसे कि आपने देखा इन्होंने आईलैश चिपकाने के लिए ट्वीज़र की जगह अपने ब्रश के पीछे का एरिया यूज़ किया है। कभी कभार क्या होता है, हम आईज के पास ट्वीज़र लाते हैं, जो हमारे क्लाइंट है उन्हें नहीं मालूम है कि वो कुछ हर्ट नहीं करेगा, पर उनको फिर भी एकदम डर जाते हैं और उनकी आईज वाटर करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए आप अगर आपके ब्रश के पीछे से उसको अगर स्टिक करेंगे, वो बहुत आराम से स्टिक भी हो जाएगी और आपके क्लाइंट्स डरेंगे भी नहीं। So, HD cream liner in ebony on my mascara brush that we do at Kryolan. I'm using it as mascara, so I'm not wasting any of my product. जैसे कि आपने देखा इन्होंने जो HD क्रीम लाइनर एबिनी जो कि ब्लैक कलर है आई लाइनर के लिए यूज़ किया था,
वो सेम कलर जो उनके हाथ में थोड़ा सा बचा था, उन्होंने वो अपने मस्कारा ब्रश से उनके मस्कारा उनके आई लैशेस पे लगाया है। And I'm just pushing them upwards to create a lift around the eye. And last and final bit, I'm going to grab a little bit more ebony and go for a really, really fine point brush to hide my lash band. What Kryolan do, our lashes have been made on a string, natural string band, which basically helps for it to sit on the eye and be a little bit more comfortable. So I'm using a very, very fine paint brush to colour in my lashes. उन्होंने एक फाइन आईलाइनर ब्रश लिया है और आप देखेंगे उनकी लैश ग्लू जो है वो सूख चुकी है, वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, बट जो लैश का जो बैंड है वो दिख रहा है। उसे कवर करने के लिए वो सेम एबनी एचडी क्रीम लाइनर यूज़ कर रही हैं। I'm going to strengthen up my eyeliner at the same time as well. जैसे कि आप देखेंगे उन्होंने जैसे ही एचडी क्रीम लाइनर लगाया है, उनकी जो आई लैश का जो बैंड था वो छुप चुका है और जो उनका आई लाइनर है वो भी और इंटेंस हो गया है। And this just gives that beautiful definition between the lashes and the eye makeup. And this is one look I love seeing, is when your model or your client looks down, you get that beautiful sharp line. आप देखेंगे उनका आईलाइनर एकदम अच्छा शार्प हुआ है। कभी कभार बहुत लोग उनके क्लाइंट की आईज ओपन करके भी आईलाइनर करते हैं, पर वो जैसे ही क्लोज करते हैं वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखता है, वो एकदम परफेक्ट लाइन नहीं आती है। जैसे आपकी क्लाइंट आंखें बंद करती है और अगर आप तब आईलाइनर कर रहे हैं, आपको एकदम शार्प, एकदम वेल डिफाइंड आईलाइनर मिलेगा। I'm just extending it that little bit more as it is a statement liner and I'm allowed. I'm the makeup artist. Okay. So before I get my model to open her eyes, I always press my fingers just underneath the eye area and I get her to open and look up. It's alright, keep looking up. There we go. So if they are a little bit stuck, you're going to stretch the bottom lash so the top lash releases. Look up. जैसे कि आप देखेंगे कभी कभार हमारे साथ भी होता है, हम जब लैशेस लगाते हैं, जो हमारी लोअर लैशेस है वो अपर लैशेस से चिपक जाती है। Yeah. अब जैसे ही देखेंगे उन्होंने उनके ब्रश के पीछे से पहले लैश को थोड़ा ऊपर दबाया है ताकि वो और लिफ्ट हो जाए, और आप आपके आईज के नीचे जो आपकी लोअर लैश होती है, आप अगर उसको खींचेंगे तो वो वापस सेपरेट हो जाएगा और आपकी मॉडल एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगी। So as you can see, before my lash glue sets, I'm pushing, look down for me, I'm pushing my eyelashes upwards. Look up. Ah, that's it. Look down. And I've not cut these lashes because I've created an elongated lash line. It's alright. I'll fix it when we get on the stand anyway. Yeah? Cool. So, that is your red carpet look, guys. I am going to reveal the body as well because as a preparation, I actually added the Shimmering Event foundation on the body as well as on the legs. And this can actually give the illusion of a really airbrushed body look. So I'm going to reveal. There we go. So I don't know if my model just moves her body slightly. You can actually see a really beautiful glow, especially on the leg area. Now, if you want to make this a little bit more intense, because they haven't kicked me off the stage yet, I'm going to use Moon Dust, the colour that I put on the high points of the cheeks, on the top of her décolleté area, or décolletage. आप देखेंगे हमने ऑलरेडी उनकी बॉडी पे लिक्विड हाइलाइटर लगा के रखा था। अभी उससे थोड़ा और शाइनी और हाइलाइटेड दिखाने के लिए हम हमारा पाउडर हाइलाइटर जो कि ग्लैमर ग्लो है वो लगा रहे हैं उनके हाई पॉइंट्स पे।
ताकि वो और ज़्यादा हाई शाइन दिखे और ज़्यादा वो रेड कारपेट पे ज़्यादा ग्लैमरस दिखे. And this is called body contouring. On the highest points of the skin, creates the illusion of a thinner area. So, like me, I like to place it just on the top of my arms to make my arms look a little bit more slimmer. And this is what we call body contouring, which is very, very popular when you're working with a lot of celebrity-based clients. They want their body in all shapes and sizes to be contoured to make them look enhanced. So guys, thank you so, so much. That is my red carpet celebrity. You can do better than that. Louder, louder. That's it, perfect. So I'll be back at the Kryolan stand doing 2 more demos on our mini stage that we have. So please feel free to come over, come and take a selfie, come and take pictures, and come and ask me any question you like. This is what I'm here for. Yeah, so I'll see you guys back on the Kryolan stand.